What are mutual funds? Hi guys, this is a question that gets asked to us so often. So this video is an attempt to answer and demystify what mutual funds are in the simplest ways possible. So let's get into the video. So let's begin with understanding this basic flowchart. इसके 4 parts हैं: investor, fund manager, securities, and returns. Now, an investor is anybody like you and me who wants their money to grow. तो एज एन इन्वेस्टर आप पैसे डालते हो म्यूचुअल फंड में, एंड इस म्यूचुअल फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर की। ये फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट होता है जो चूज करता है कि आपके पैसों से कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, विच इज बेसिकली सिक्योरिटीज, एंड देन these stocks generate returns, and these returns are passed down to you as an investor. This is basically how a mutual fund works. Now we'll understand the first part of the flow chart. So basically एक investor दो तरह से अपने पैसे डालता है म्यूचुअल फंड में, and वो है SIP and lump sum. Now lump sum is anything which is one huge amount invested together at one time, like a one-time payment for a purchase that you do. So SIP stands for Systematic Investment Plan. Now, how is this systematic? Because SIP gets deducted from your account directly every month, and you can choose the amount, you can choose the date that you want this to be deducted, and you can also choose which funds you want this to go into. मतलब suppose you decide कि मेरे को हर महीने 10,000 की SIP करनी है, तो ये 10,000 आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से फंड्स में डालना है, and you can divide it in 5 funds, in 10 funds, or in 4 funds, depending on your preference and depending on the diversification that you want. So the SIP has a few advantages. The first one is discipline. This really helps you create discipline क्योंकि ये automatically deduct हो जाता है आपके अकाउंट से, तो you know कि आपको इतना बैलेंस हर महीने मेंटेन करके रखना है till the time your SIP doesn't get deducted, and you spend only what is left after investing. The second advantage is कि you don't need to time the market. मतलब you don't need to see कि कब मार्केट नीचे है एंड तब मैं इन्वेस्ट करूँ या कब मार्केट ऊपर है। हर महीने हर डेट पे मार्केट अलग होती है, तो SIP आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी एडवांटेज देता है बिकॉज ऑफ दैट। तो टू बिगिन योर जर्नी एज एन इन्वेस्टर, एंड SIP कैन बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये डिसिप्लिन तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज वेरी यूजफुल। ऑल्सो यू शुड कीप स्टेपिंग अप योर इन्वेस्टमेंट एज योर इनकम इंक्रीजेस, and for lump sums use it whenever you get random bonuses through the year. Or if you're a freelancer who does not have a fixed income, then lump sums can be your choice. Now let's come to the second segment. तो आपकी तरह बहुत सारे स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड स्कीम में डालते हैं, एंड इससे एक पूल्ड रिसोर्स ऑफ मनी क्रिएट हो जाता है फॉर द फंड मैनेजर टू देन इन्वेस्ट मनी इनटू वेरियस डिफरेंट स्टॉक्स। अब फंड मैनेजर कैसे पैसे डालता है? हर फंड की ना एक थीम होती है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमैटिक, सेक्टोरल, फ्लेक्सी कैप, right? There are various kinds. Now to explain a few, large cap would be a mutual fund that would aim at only investing in large companies. A small cap mutual fund would be a fund that would aim only at investing in smaller companies that have the potential of becoming larger companies. And the thematic fund or a sectoral fund would be one which would invest in particular sectors. For example, automotives, infrastructure, or manufacturing sectors. Mutual fund is essentially solving 2 problems for a small scale investor. First is that as a small scale investor, for you to buy the number of stocks that a mutual fund buys, you will need a lot of capital. And secondly, a lot of time, in-depth research and expertise goes into choosing these stocks, जो कि एक small scale investor के पास नहीं होता है. Therefore, mutual funds become a very lucrative choice of investment for a small scale investor and for any beginner investor. Coming to taxation, there are 3 types of things that you need to know here. First is exit load. मतलब अगर आपने कोई भी investment सपोज 1 April 2024 को करी एंड आप उसको विड्रॉ करते हो 1 April 2025 के पहले, विच इज विद इन 1 ईयर, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट पे एग्जिट लोड देना पड़ता है 1% का। सेकेंड इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाउ दिस मीन्स दैट इफ यू विड्रॉ योर मनी विद इन 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टिंग, तो जो भी आपकी ग्रोथ होती है उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स ब्रैकेट। Third is long-term capital gain. Suppose you're withdrawing money post 1 year of having it invested. तो जो भी आपकी ग्रोथ होती है उसमें 1 लाख की ग्रोथ is exempted. There is no tax, it's tax free. But any growth which is 1 lakh and above, suppose you have a growth of 1,50,000,
The remaining 50,000 will be taxable at 10%. So this was my attempt at explaining mutual funds to you in the most basic way possible. And if it did that for you, please subscribe to our channel and also like this video. Stay tuned for more.